Radha Krishna Gopinath Sam Kund Radha Kund की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, द्वारका धाम की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय, और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच. Ushitva hastinapure, Ushitva hastinapure, Masan kotipayan hari, Masan kotipayan hari, Suhridang cha vishokaya, Suhridang cha vishokaya, Swasuscha priyakamyaya, Swasuscha priyakamyaya. Stay, Hastinapure. In the city of Hastinapur. Masan. Months. Kotipayan. A few. Hari. Lord Shri Krishna. Suhridam. Relatives. Cha. Also. Vishokaya. For pacifying them. Swasu, the sister, Cha, and Priyakamyaya, for pleasing. Translation: Sri Hari, or Lord Sri Krishna, resided at Hastinapur for a few months to pacify his relatives and please his own sister, Subhadra.
So read the purport also. Purport. Krishna was to start for Dwaraka, his own kingdom, after the battle of Kurukshetra and Yudhishthir's being enthroned. But to oblige the request of Maharaj Yudhishthir and to show special mercy to Bhishma Deva, Lord Krishna stopped at Hastinapur, the capital of the Pandavas. The Lord decided to stay especially to pacify the aggrieved king, as well as to please Subhadra, sister of Lord Sri Krishna. Subhadra was especially pacified because she lost her only son, Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife, Uttara, mother of Maharaj Parikshit. The Lord is always pleased to satisfy his devotees in any capacity. Only his devotees can play the part of his relatives. The Lord is absolute. So, we are personalist. We believe, not the question of belief, but actually the ultimate truth of Absolute is a person. That is the statement of Vyasdev. Vadanti tattattavidas tattam jadgyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti sat. Tattavid, those who are in knowledge of the tattva, of the absolute truth, they know that ultimately the absolute truth is manifested as a person like you, like me. Not exactly like you, like me, but so far personality is concerned, individuality is concerned, he is like us. In the Bible it is said, man is made after God. Because God is person, therefore we are person. Otherwise, where from our personality comes? God is the origin of everything. Therefore, He is the origin of personality, individual. Otherwise, how we are person, how we are individual? Where from we get this personality, individual? So, the foremost feature of the Absolute Truth is a person. And as a person, he has got the same feelings as we have got. As we have got feelings for our relatives, for our brother, for our sister, for our friends, for our enemies, the same thing there is also. If you study your personality or your friend's personality, you can get a rough idea of the Supreme Personality. Because our personality is dependent on the Supreme Personality. Mamai Vangsa. We are simply fragmental personality. Just like the sparks and the fire, or the drop of ocean water and the ocean. The difference is in quantity. A drop of ocean water or a fragmental spark of the fire is of the same quality like the fire or the ocean, but in magnitude
It is very, very small. God is Vibhu, the greatest, and we are the smallest. God is infinite, we are finite. Infinitesimal. That is the difference. Otherwise, everything is there, as we have got. Just like the son inherits the quality of the father, similarly, we are supposed to be sons of the Supreme Person. Therefore, in minute quantity, we have got all the qualities of God. Not all, 78%. In very minute quantity. That is our perfection. If we revive godly qualities, 78% in minute quantity, that is our perfection. That is there, already there. Simply it is covered by this material energy. Otherwise, everything is there. So the feelings of affection, there is also in Krishna. So, Krishna expands. Eka Bahushyam expands. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavi Stabhi Jaiva Nijarupataya Kalavi. Krishna expands his energy. Ananda Chinmaya Rasa. Rasa, humor, mellows, to enjoy. He expands himself. Just like Sri Sarup Damodar Goswami has given us the definition, Radha Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Radha Krishna Pranaya Vikiti Alladini Shakti Asma Ekatmanavapi Deho Bhedo Gato Pura Chaitanyakhyam Prakatamaduna Taddan Chaikamaptam. Radha and Krishna, the same, absolute. But Radharani is the expansion of the pleasure potency of Krishna. We have got potency, as Krishna has got. Parasya Shakti Vividhaiva Sriyate. This is the Vedic injunction. Paradise, absolute truth, has many potencies. Innumerable. Vividhaiva Sriyate. One of the potency is the pleasure potency. Just like we want some pleasure. Pleasure is the constitutional position of spirit, soul, or the absolute truth. Anandamaya Abhyasa. God and we, being of the same quality, we are by nature always joyful. So our joyfulness is checked when we are in material condition. Therefore there is struggle. We are hankering after to revive that joyfulness, but this contamination of material energy, Satagun, Rajagun, Tamagun, they are checking obstacles. Therefore, we have to get free from these obstacles. Satagun, we have to go above the Satagun, Shuddha Satta. Then again we revive our original position of joyfulness. Brahma Bhuta Prasanna Na Sochoti No. This is the joyfulness. No lamentation, no hanker. We hanker after something which we want,
and we lament for something which we lose. Here there are two business, something gaining and something losing. Just like businessmen, they have got two business, either to make profit or to lose. At the end of the year they calculate whether we are loser or gainer. But in the spiritual world there is no such thing as to gain or as to lose. There is nothing. Absolute. That is absolute. That idea we haven't got just now. But that is the nature of the spiritual world. There is no question of loss, nor there is any question of gain. Simply ananda, pleasure. And pleasure means because there is no loss. Ananda ambudhi baddhanam. There is ananda and ananda ambudhi. Ambudhi means the ocean. Here the ocean does not increase. If the ocean increases, then whatever small land we have got, it would have been finished. No, ocean does not increase. You have seen that Los Angeles on the beach, the big Pacific Ocean, but just about 3 years or 4 years off from the ocean, we are walking. We are confident that although the Pacific Ocean is so big, powerful, it cannot come here. Only a few years off we are walking, confident. So everyone is working under the direction of the Supreme Lord. Ocean, although very powerful, very big, still by the order of Krishna, it cannot go beyond the limit. It cannot go. So, everything, jasa gaya, bhramati kala chakra, jatchaksuri sasabita sakala grahana, raja samasta suramurti aseshu teja. Now this sun, unlimited heat, asesha, teja, heat, but it is also limited. It cannot expand so much heat so that we may burn into ashes. The sun can do that. As the big ocean can overpower all your cities and towns in a second, similarly the sun also can burn the whole universe within a second. It has got so much potency, temperature. But jasa gaya bhramati sangrita kala chakra. No. The kala chakra, I think the scientists also say that the sun from the orbit, if it comes this side 1 inch or that side 1 inch, one side coming this side, the whole universe will be frozen, and the other side, whole universe will be burned. I do not know whether here is any scientist, they say, but it cannot go this side or that side. Samvrita Kala Chakra, the orbit which is given by Krishna, that you shall travel within this orbit. Govindamadi Purusham Tamaham Bhaja. So everything, and what to speak of ourselves. We want to become independent. What is the meaning of independence? Even the sun, moon, or the sea, ocean, nobody is independent. And how we can be independent? We are teeny, very small. There is no question of independence. The so-called independence, as we fight for independence, that is Maya. There is no question of independence.
When I first met my Guru Maharaj, on the first meeting, he said that you go to preach in the Western country. I was surprised. There was no acquaintance. The Chaitanya Mahaprabhu's message, you are all educated young man, you should go and preach. I replied that we are dependent nation, Indians, who will hear us? Nobody will hear us. So at that time he explained dependence and independence. Temporary, it has no meaning. Actually, at that time I could not realize the independence. We are waiting for independence. What independence we have got? Independence means you go for 1 kilo of rice and stand there for 2 hours. This is our independence. Everything is controlled. You cannot get. And the price, before independence, the price of rice was 2 annas or 5 rupees, 6 rupees per month. 2 annas per kilo. Now it is more than 2 rupees. Everything. Practically, we have increased our dependence, not independence. In the name of independence, we have increased our dependence. So actually, there is no independence. But we manufacture so-called independence. Nobody is independent. I thought we are so much dependent on the state rules and regulations. America is independent. When I went to America, I saw they are so dependent that any young man could be called for military service without any objection. So the whole nation is dependent on the whims of the military board. So dependent. So we are dependent. So long we are under the control of Maya, we are dependent. We are dependent. Our constitutional position is dependence, servitude. So by false declaration, we think that we are now going to be independent. We shall not serve Krishna, we shall become independent. I shall become Krishna. As the Mayavadi thinks that he shall become Krishna, I shall become God. That is another dependence. We cannot be independent, that is not possible. And to remain dependent, that is our happiness. That we do not. Instead of declaring independence, if we remain dependent, that is our happiness. Just like children, women, Shudras, their dogs, their happiness is when they are dependent. They artificially, now in India also, the women are imitating independence. But I have seen in the Western countries, in your country, the independence, declaration of independence by the woman class is not their happiness. They are unhappy. Better to become dependent upon father, upon husband, and upon elderly children. That is their happiness. Just like Kunti. Kunti, so much qualified lady. She can call any demigod. She got one benediction from Durvasa Muni when she was young girl.
she said, Durvasa Muni, Maharaj Kunti Bhog used to invite so many saintly persons. That is the system in India still. So once Durvasa Muni became a guest of Maharaj Kunti Bhog, and Kunti served the Durvasa Muni, and he was very pleased. And he gave her one benediction that you can call any demigod by your sweet, as soon as you desire the demigod. So, Kunti, she was a girl, she made an experiment, immediately called the Surya, the sun god, and he came. So, Surya asked him that you have called me, you take some benediction, take a son from me. She refused, no, I am unmarried, I cannot. No, there is no harm. Your son will be born from the ear. Generally, the son is born from the vagina, but Kunti's son was born from the vagina. Therefore, Karna. The first son was Karna, unmarried. Therefore, Karna was, I am to say, given away, because he could not sew. And when Karna was floating on the water, that one carpenter picked up, and then he raised him. The Karna was known as the carpenter's son, Sudra's son. Actually, he is Kunti's son. So when Karna was killed, Kunti began to cry. And Yudhishthira Maharaj inquired, Mother, why you are crying? At that time she admitted, Karna was my son. Oh, such a secret you did not disclose? We treated Karna as our enemy. We could have taken. No, there are so many incidences like that. So, there are so many things in the Mahabharata, in the Srimad Bhagavatam, you can learn. Social, political, economical, philosophical, religious, anything. Veda means knowledge. So these are Vedic literatures. Pancham Ved, Mahabharata is Pancham Ved. And Srimad Bhagavatam is the essence of Vedic knowledge. Nigama kalpataror golitam phalamidam. Nigama means Vedic literature. And it is kalpataru. Kalpataru means desert. Whatever knowledge you want, you will get it. Veda means knowledge. Vetti Veda, Veda Jnana. So Veda means Jnana, knowledge. Any type of knowledge you want, there is in the Vedic literature. So it is meant, Veda, Jnana, knowledge is meant for the human society. It is not meant for the animals. Animals cannot study Veda. And what is the purpose of Veda? The purpose of Veda is to understand Krishna. Vedashta sarvai ahameva vedyam. This is Veda. If you try to understand, or if you understand very little, you cannot understand Krishna fully. Krishna himself cannot understand himself. So, it is not possible. But whatever Krishna is speaking about himself in the Bhagavad Gita, if 1% you can understand, then your life is Vedic knowledge.
That is Vedic. Vedaishta sadvayaham eva. So, all these relatives of Krishna, the Pandavas, his sister Subhadra, Krishna Balaram Subhadra. Subhadra was sister of Krishna. So, Baladev wanted to hand over the sister to Duryodhana, and Krishna wanted to hand over the sister to Arjuna. Two brothers, difference of opinion. But elder brother's order cannot be disregarded. Therefore, Krishna planned that Arjuna may kidnap his sister. So Subhadra was kidnapped by Arjuna in the dress of a sannyasi. Don't learn this business, sannyasi. But Krishna planned it. That will come because he was known, he becomes as ordinary Arjuna, then he will be recognized because he is the cousin brother. Therefore, he covered himself as a sannyasi, just like Ravan. Ravan also kidnapped Sita Devi as a sannyasi. So in former days also, the sannyasis were very expert in kidnapping. Therefore, in the Kali Yuga, sannyas is forbidden because they will not be able to follow the rules and regulations. But Chaitanya Mahaprabhu inaugurated, he himself became sannyas. Therefore, we are trying to follow his footsteps to accept sannyas. But we should not become a sannyasi like Ravan. No. We should try to follow the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu. He was very strict. No woman could approach him. They were allowed to offer obeisances from distant place. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very strict about asking. Even in his grihastha life, he was very strict. He would not play any joke with any woman except his wife. And that also, once he joked with his wife, not with any other woman. So he was so strict. Sri Chaitanya Mahaprabhu's opinion is that Vishahinam sandarsanam athajusitanch ha hanta vishabhakshanad dappasad. Vishahinam sandarsanam, to mix very intimately with the Vishayis. Vishay means those who are very much fond of eating, sleeping, mating and defending. They are called Vishay. They have no other business. So practically at the present moment the whole world is Vishay. But this line, Krishna consciousness line, is so transcendental that one has to give up this Vishayi idea. Vishaya chhariya sera se mojiya mukhe bolo hari hari. We chant Hari Hari, but actually Hari Hari, I don't know. We can chant Hari Hari only when we give up Vishaya. Vishaya chhariya sera se. Otherwise, Hari Hari is not purely chant. Therefore, there are 10 kinds of offenses we have to give up. Shuddhana, when we chant pure Hare Krishna Mahamantra,
then we are elevated to the platform of transcendental love. Otherwise, we can attain up to liberation, not on the platform of loving. So, Chaitanya Mahaprabhu was very strict about Vishayi and Sri Sangi. Chaitanya Mahaprabhu was asked how to, what is the business of a Vaishnava? He summarized in 2 lines. Asat sanga tyagi Vaishnavacha. Asat sanga tyagi, to give up the association of asat. Asat means materialistic. So who is asat? Now, asat acts Trishangi and Krishna bhakta. Those who are too much attached for material enjoyment, they are asat. And one who is not devotee of Krishna, he is also asat. So you have to give up the company of this kind of people who are too much materially attached and is not devotee of Krishna. If we can avoid these 2 persons, then we can be fixed up in devotion and salvation. Sa Ushista Hastinapuri Masan Katipayan Hari Srihidang cha Vishokaya Sasushcha Pijakamaya. Sasu means sister and the relatives. So although Krishna is unattached, still he observed the social obligation. There was great fight. All of them lost their relatives. Not only the Kauravas lost everything, but the Pandavas also. Just like Subhadra's son, Abhimanyu. He was only 16 years old. And his wife Uttara, she was once taught by Arjuna. She was disciple, student. Arjuna was teaching her dancing. Virat Raj, King Virat's daughter, Uttara. They were in disguise, Ajnatavas. So the Virat Raj did not know that Arjuna was living in his house. So this daughter of Virat, Uttara, when Arjuna was known that he is Arjuna, he requested that you marry my daughter. So Arjuna said, no, how can I marry? She is my disciple. She is my student. She is just like my daughter. How can I marry? Then he promised that I shall get her married with my son, although he is not very grown up. So Abhimanyu was Krishna's son from the womb of Subhadra. So he was married. Only 16 years, almost of the same age. Fortunately, Uttara became pregnant. So Abhimanyu went to fight in the battlefield of Kurukshetra. He never returned. So Parikshit Maharaj was posthumous child. He took his birth after the death of his father. He did not see, not only father, many, because it was after the battles. He was the only survivor of the whole Kuru dynasty. So he was also attempted to be killed by Aswathama, by Brahmastra.
Krishna said, so Parikshit Maharaj was born after the death of his father. The grandfathers took care of him, and as soon as the child was grown up, all the grandfathers, Pandavas, entrusted the kingdom to Parikshit Maharaj, and they left home. Thank you very much. Hare Krishna. कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे भगवान सुभद्रा मैया के पास जा रहे हैं, उनके पुत्र का देहांत हुआ है तो उनको सांत्वना देने जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गॉड इज़ अ पर्सन। तो प्रभुपाद जी क्या लॉजिक देते हैं कि गॉड पर्सन है, इम्पर्सनल नहीं है? हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी एक तो एक ये देते हैं कि वी आर ऑल्सो पर्सन, और वी बाइबल में कहा गया है कि मैन इज क्रिएटेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड। सो वेयर फ्रॉम दिस पर्सनैलिटी हैज कम, इट द सोर्स ऑफ वी बीइंग पर्सन इज फ्रॉम कृष्णा। कि हम भी पर्सन है, ये भगवान भी पर्सन है, इसलिए तो हम भी एक मतलब पर्सन व्यक्ति है। और फिर इसमें प्रभुपाद जी एक ये भी कहते हैं कि अगर हम भगवान को जानना है, जो हम में भी फीलिंग है तो उसी तरह से भगवान में भी फीलिंग है। और अगर हम हमारे खुद के नेचर को स्टडी करेंगे और हमारे दोस्त को, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर करेंगे तो भगवान कैसे पर्सन हम जान पाएंगे थोड़ा बहुत। सो ही इज सुप्रीम पर्सन एंड वी आर माइन्यूट पर्सन। यस, तो भगवान और हमारे अंदर कुछ समानताएं हैं। भगवान भी पर्सन है, हम भी पर्सन हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है। तो हमारी पर्सनैलिटी है, तो हमारी पर्सनैलिटी भगवान से आ रही है, तो भगवान में भी पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, तभी वहाँ से आ रही है। ये लॉजिक देते हैं। इसमें प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं कि क्वालिटेटिवली हम भगवान से समान हैं। क्वालिटी जैसे भगवान की पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, ऐसे हमारी भी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी है। ये 2 उपमाएं देते हैं। एक तो प्रभु जी पानी का देते हैं, जैसे क्या, कौन सा पानी? ओशियन वाटर। हाँ, ओशन। तो उसकी बूंद और जो पूरा ओशियन है वो गुण के रूप से सेम है, पर क्वांटिटी वाइज अलग अलग है। और दूसरा सूर्य की किरण का देते हैं कि जो सूर्य की किरण का नहीं, फायर एंड स्पार्क्स हैं। ठीक, हरी हो गया, हरी वो। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर पर्सनैलिटी एंड गॉड्स पर्सनैलिटी? सिम पर्सनैलिटी है पर डिफरेंस भी है। ये ध्रुव महाराज प्रो। प्रभुपाद बोले कि वी आर अणु एंड कृष्णा जो है वो विभु हैं। हम उनके मतलब अंश हैं। वो तो हमारे क्वांटिटी में डिफरेंस हो गया। इवन पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस है। क्या पर्सनैलिटी में डिफरेंस है? बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कि हम उनके वो 100% सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हम 78% है, और जो क्वालिटीज़ हैं वो माइन्यूट क्वांटिटी में। तो एक तो 78% क्वालिटेटिवली 100% सेम नहीं है, 78% सेम है और माइन्यूट क्वांटिटी में। और एक और चीज़ बोले प्रभुपाद जी कि आवर पर्सनैलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी। ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान पे डिपेंडेंट है। भगवान की पर्सनैलिटी
इंडिपेंडेंट है। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि हम परफेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये 78% क्वालिटीज़ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बोलो। इसमें बता रहे थे कि जब कोई मटेरियल अटैचमेंट को पूरी तरह से छोड़ देता है, अटैचमेंट फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो इससे जब वो मुक्त हो जाएगा तब वो जो ब्रह्मभूत स्टेज में आ जाएगा। यस प्रभुपाद जी, एक दो चीज़ें बोले थे कि हम सही बोल रहे हैं आप कि जो माया की कवरिंग है उससे जब रिमूव हो जाएंगे, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, देन वी कैन अटेन 78% क्वालिटीज़। और एक और चीज़ बोले थे, अगर हम थोड़ा सा भी वैदिक ज्ञान को समझते हैं, 100 भी समझ लेते हैं, क्योंकि कृष्णा को 100% समझना पॉसिबल नहीं है तो अगर 100 भी समझ लेते हैं जो वैदिक ज्ञान को पढ़ के, तो भी हम अपने 78% क्वालिटीज़ या परफेक्शन को अटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक और चीज़ हम पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले थे कि कृष्ण का जो पर्सनैलिटी है, हमारा पर्सनैलिटी है, वो सेम है। तो कौन सा एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सनैलिटी को प्रभुपाद जी ने सिमिलर पाया? व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनैलिटी कृष्णा प्रभुपाद फाउंड इट सिमिलर? जैसे हमारे भी रिलेटिव होते हैं, हमारी भी फीलिंग्स होती है, सिस्टर और फादर, ऐसे ही भगवान की भी फीलिंग्स होती है और भगवान के अंदर भी वो फीलिंग्स भगवान व्यक्त करते हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे थे। यस, एक और चीज़ समझा रहे थे प्रभुपाद जी, क्या है भगवान, क्या है? आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिस। तो भगवान आनंद चिन्मय है और जीवात्मा भी आनंदमयो अभ्यासात, आनंद की खोज में है। सो बोथ आर प्लेजर सीकिंग। कृष्णा तो स्वयं आनंद से बने हैं, राधा रानी उनकी प्लेजर पोटेंसी हैं, और सोल भी इज़ लुकिंग आफ्टर प्लेजर। तो इस तरह से दोनों के एट्रीब्यूट्स सेम ही हैं। ओके, तो हमारा जॉयफुलनेस जो है, नेचर है हमारा जॉयफुल रहना, और वो नेचर कैसे चेक हो जाता है? हाउ आवर जॉयफुलनेस इज चेक्ड? जब जैसे मटेरियल जो मूड्स में आ जाती है ना, तो उसके जरिए मटेरियल मूड्स के कारण, यस वेरी गुड, मटेरियल कंडीशंस के कारण हमारा जो जॉयफुलनेस है वो चेक हो जाता है। और उसको अगर दोबारा रिवाइव करना है उसी जॉयफुलनेस को, तो हमें क्या करना होगा? सत्वगुण से भी ऊपर आना पड़ेगा, तो फिर वो जॉयफुलनेस होगा। और सत्वगुण से ऊपर के लेवल को भगवत गीता के एक श्लोक से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उसी को प्रभुपाद जी प्लेजर बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्लेजर? प्लेजर होता क्या है? प्रभुपाद कोट करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। वेरी गुड। तो इसमें बोलते हैं कि अभी जीवात्मा लेमेंट कर रहा है, हैंकर कर रहा है प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन एक्चुअल प्लेजर है मतलब जहाँ कोई लॉस ही ना हो। हाँ, तो एब्सोल्यूट वर्ड में कोई लॉस ही नहीं है, गेन ही गेन है। वो गेन श्लोक को कौन सा श्लोक कोट करते हैं जिसमें गेन ही गेन है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ठीक है। तो जिसमें लॉस नहीं है और गेन ही गेन है, वो प्लेजर है। ये प्रभुपाद जी कोट करते, वही सत्वगुण से ऊपर का लेवल है, ठीक है। इवन तीनों गुणों में
कभी ना कभी व्यक्ति दुखी होता है, शोचती कांक्षती चलता रहता है कि उसने सतगुण में कम से कम अपनी इज्जत के लिए होगा, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, फिर दुखी हो जाएगा किसी ने कुछ बोल दिया तो। रजोगुण के लेवल पे कोई उसकी चीज़ ले ले, ये मेरी चीज़ कैसे हाथ लगा लिया ये तो तमोगुण के लेवल पे तो उसको नींद से उठा दो थोड़ा फिर दुखी हो जाएगा। ओके, प्रभुपाद जी दो उदाहरण देते हैं कि कृष्ण इतने पावरफुल हैं कि जो मोस्ट पावरफुल एंटिटीज़ हैं इस वर्ल्ड में वो भी अपने लिमिट से बाहर नहीं आती। वो कौन कौन से उदाहरण देते हैं कृष्ण के कंट्रोल से, लिमिट से बाहर नहीं आती? एक एक, चलो एक एक बोलो। इनका देते हैं हाँ? कि ओशन इतना बड़ा है, हाँ। पर उसके फ्यू जो यार्ड्स है उसके हम चल रहे हैं, तो वो उस सीमा को नहीं लांघता है। हाँ, पैसिफिक ओशन प्रभुपाद जी बोलते हैं। यस, कुछ भी हम 2-3 यार्ड्स आगे ही चल रहे हैं अपनी बाउंड्री से, वो क्रॉस नहीं करता है, कॉन्फिडेंट होके चलते हैं। एक एग्जांपल सन का दे रहे थे कि सन जो है अपने ऑर्बिट से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, इधर उधर नहीं होता है। अगर हो जाए तो हो गया तो या तो डीप फ्रीज हो गया तो डीप फ्राई हो जाएगा सही बात है। बेक हो जाएंगे, बेक, फ्राई तो नहीं होंगे, फ्राई के लिए तेल लगाना एक और, हाँ, सन का हीट भी कंट्रोल्ड होता है, डिस्टेंस भी कंट्रोल होता है। यस, ओके। ओके, तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे थे कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस। प्रभुपाद जी अपना एक लाइफ से कोट कर रहे थे कि मैं सोचता था ये इंडिपेंडेंस चाहिए पहले, लेकिन व्हाट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंस? तो जी प्रभुपाद जी बता रहे थे कि पहले जब गुरु से मिले थे वो, तो उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि हम अभी डिपेंडेंट हैं, मतलब यहाँ पे नहीं ऐसे कि इंडिपेंडेंट पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी इसके इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज या प्रभुपाद जी? अच्छा, हाँ, प्रभुपाद जी जो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट के नाम पे उसको डिपेंडेंसी बढ़ा ली अपनी। पहले राइस का देते हैं एग्जांपल कि मे बी 2 आना था पहले 1 किलो राइस का, अभी 2 रुपये हो गया है, ऐसा कुछ। और हर चीज़ पे कंट्रोल आ गया, मतलब जैसे यूएस का एग्जांपल दे रहे थे कि वहाँ पे यंग यूथ्स को जाना ही पड़ता आर्मी में, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते वो, तो कि मतलब वो आर्मी जो बोर्ड है उसके अंडर सारे हैं। इतना ही याद है। सही, अच्छा है, यही चीज़ बोला था। हरी वो तो सब लोग डिपेंडेंट हैं, चाहे इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। अमेरिका इंडिपेंडेंट था, उसमें भी इतना कंट्रोल है, हर खाने पे भी कंट्रोल है। कई कंट्रीज़ में तो आप ऐसे ही चल सकते हो, ऐसे वैसे भी नहीं चल सकते, सर पे कपड़ा रख के चलना है, मूवी भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं लोगों को। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस? तो प्रभुपाद जी इसमें से क्या प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसमें से क्या प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं कि सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस से क्या प्रिंसिपल है? प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि डिपेंडेंसी जो हमारा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो आप यहाँ वहाँ कहीं पे भी डिपेंड होना ही पड़ेगा, आपको कंपलसरी है। फिर बता रहे थे कि अगर हम सिंपली भगवान पे डिपेंडेंट होंगे तो एक्चुअल हैप्पीनेस होता है, तो ये रियल इंडिपेंडेंस। रियल इंडिपेंडेंस, माया से इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, तीनों गुणों से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें
प्रभुपाद जी बोल रहे थे बीइंग डिपेंडेंट इज रियल इंडिपेंडेंस। इसमें एक उदाहरण दे रहे थे कि कैसे समझे बीइंग डिपेंडेंट इज रियल इंडिपेंडेंस। प्रभुपाद जी यहाँ पे वुमेन क्लास का देते हैं कि जैसे उस समय प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अमेरिका में दे आर डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट, तो फादर पे या हस्बैंड पे से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, लेकिन उनकी नेचुरल जो है वो है कि बीइंग डिपेंडेंट, उससे हैप्पी भी रह सकते हैं। हाँ, वो दुखी थी वहाँ की जो अमेरिका में जो फीमेल्स थी, जो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती, फिर उनका शोषण होता है, प्रोटेक्टेड नहीं है। Yes. Better to become dependent upon father, upon husband and upon elderly children. That is their happiness. तो इसमें प्रभुपाद जी महाभारत से एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि how was the females at the time of महाभारत। प्रभुपाद एग्जाम्पल कोट करते हैं कुंती महारानी का। तो कुंती महारानी जो है टोटली डिपेंडेंट थी अपने जो बेटे हैं उन पे, तो उनके मतलब पति तो मर गए थे लेकिन वो डिपेंडेंट थी उन पे, उनकी केयर में थी। तो मतलब वुमेन को केयर में प्रभुपाद जी स्ट्रेस कर रहे हैं, उनको केयर में रहना चाहिए था, एल्डरली सन्स या फिर पहले फादर की केयर में थी। जो तो तब दुर्वासा मुनि को सर्व किया था, कर्ण का हिस्ट्री बताते हैं। फिर उसके बाद एल्डरली सन्स की केयर में थी, जिस पांडवों की केयर में थी। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो महाभारत है और श्रीमद् भागवतम है, महाभारत को क्या बोला है प्रभुपाद ने, एक टर्म दिया है पंचम वेद, और श्रीमद् भागवतम को निगम कल्पतरुर गलितम फलम, मतलब कि एसेंस ऑफ ऑल द वेदास, प्रभुपाद जी बोलते हैं। इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ उदाहरण प्रभुपाद ने दिए कि ये सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं। तो क्या क्या सीख सकते हैं हम भागवतम महाभारत से? एक चीज़ बोलो। पॉलिटिक्स। यस, पॉलिटिक्स सीख सकते हैं, वेरी गुड। पॉलिटिक्स बुरी नहीं होती, हम बुरी कॉनोटेशन में देखते हैं। इसी राजनीति, राज्य चलाने के लिए राजनीति चाहिए होती है, सिखाते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, बीए में सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस। यस, और क्या सीख सकते हैं? उनको बोलना ना। सोशियोलॉजी सीख सकते हैं। यस, सोशियोलॉजी सीख सकते हैं, वेरी गुड। और क्या सीख सकते हैं? इकोनॉमिकल भी हो। इकोनॉमी कैसे, अर्थशास्त्र भी है, ये आर्थिक विकास कैसे करना है। यस, फिलॉसफी, दर्शन। अब बहुत सुंदर फिलॉसफी है भागवतम की, इतने सुंदर उपमाएं हैं, अभी भी इतनी सारी फिलॉसफी चर्चा कर रहे हैं। और रिलीजियस थिंग्स, और उसके ऊपर जो प्रॉपर नहीं बोला है लेकिन बताया है, स्पिरिचुअलिटी। ये सब चीज़ें हम सीख सकते हैं। और अल्टीमेटली वैदिक ज्ञान का पर्पस क्या है? ये सब चीज़ें सीखना क्यों है? क्यों पॉलिटिक्स सीखना है? क्यों सोशियोलॉजी सीखना है? क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीखना है? पर्पस ये नहीं है, ये साइड बिजनेस है। मेन बिजनेस क्या है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो, भगवान को जाना। यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं, वट एवर कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ इन द भगवद गीता, इफ 100th part 1% you can understand, your life is successful। तो 1% भी कोई भगवद गीता समझ ले, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ठीक है, तो उसकी जीवन सफल हो जाएगा। ओके, फिर एक और हम सब ब्रह्मचारी के लिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पे एक शिक्षा दिए हैं कि सन्यासी जो थे पुराने टाइम में द्वापर से ही करप्ट हो गए थे, इसलिए कलयुग में वर्जित है। तो द्वापर में और त्रेता में भी प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए हैं। तो एक तो अर्जुन का दिए हैं, दूसरा रावण का उदाहरण दिए हैं।
ठीक है, जो दोनों ने ही किडनैप किया था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सन्यासीज वर वेरी एक्सपर्ट इन किडनैपिंग। तो देखो कलयुगा में फॉरबिडन है, फिर भी हम सन्यास क्यों लेते हैं यहाँ पे? हमारे कलयुग में सन्यास क्यों दिया जाता है हमारी संस्था में? प्रभुपाद जी खुद सन्यासी थे, भक्ति सिद्धांत महाराज खुद सन्यासी थे। प्रभुपाद बोलते हैं बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, तो वी आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यस, तो चैतन्य महाप्रभु के फुटस्टेप्स। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या एग्जाम्पल सेट किया, हमें क्या फॉलो करना है? What is the example set by Chaitanya Mahaprabhu? असत्संग त्याग वैष्णवाचार। और उसके पहले एक बताया था कि संदर्शनम योषिताम अथ संदर्शनम विषय नाम अथ योषिताम से संगी संगम। मतलब वो बाकी से कि जो अपोजिट जेंडर है या विषयी लोग हैं उनसे डिस्टेंस बना के और रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। स्ट्रिक्ट, यस, वेरी स्ट्रिक्ट इन डीलिंग विद विषयी एंड वुमेन। ठीक है, तो ये सन्यासी का स्टैंडर्ड सेट किया है चैतन्य महाप्रभु ने। एंड ब्रह्मचार्य आश्रम इज द, यू कैन से, ट्रेनिंग फॉर द संन्यास आश्रम ओनली। वी हैव टू बी ट्रेन्ड। सो विषयिनाम संदर्शिनाम अथा योषिताम च हंता हंता विषय भक्षणो अपि असाधु। और वैष्णव की डेफिनेशन में जो आपने बोला वो श्लोक बोलते हैं कि हु इज अ वैष्णवा, कौन है वैष्णव? हाँ, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। अब असत किसको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? महाप्रभु बोलते हैं जो वन हु इज टू मच मटेरियलिस्टिक, और दूसरा बोलते हैं वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, हाँ, उस नॉन डिवोटी। ठीक है, तो असत्संग त्याग करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा? प्रभुपाद भजन कोट किए थे कि जो हरी हरी हम ले पाएंगे जब विषय को छोड़ेंगे। विषय छड़िया से रसे मजिया। वेरी गुड। मुख्य बोलो हरि हरि। शुद्ध नाम तब ले पाएंगे। नाम तो ले रहे हैं, हरि हरि तो बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं ले पाएंगे। नाम अपराध की भावना बनी रहेगी। कौन सा अपराध रहेगा? नाम के बहुत सारे, हाँ, 10th भी रहेगा, नाम के बल पे अपराध करना या पाप करना, वो भी रहेगा। और यहाँ पे प्रॉपर लिखा, देन वी कैन बी फिक्स्ड अप इन डिवोशनल सर्विस। फिक्सिटी तभी आएगी, नहीं तो वेवरिंग रहेगा। ओके, इसमें प्रभुपाद जी जो थे, प्रभुपाद जी ने फिर लास्ट में एक और उदाहरण दिया कि किस प्रकार से अर्जुन भी बहुत अच्छे डिवोटी थे, एंड ही वाज आल्सो फिक्स्ड अप। ही वाज गिवन सम ऑफर एंड ही रिजेक्टेड दैट ऑफर। जब अज्ञातवास में थे तो विराट राज की जो पुत्री थी उत्तरा, उनको गाइड कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे। तो विराट राज ने उनको प्रपोजल दिया कि आप मेरे जो बेटी है उनसे विवाह कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर, मेरी डिसाइपल्स है, इसलिए मैं इसे मेरे नहीं करूँगा, मैं अपने बेटे से कर देता हूँ। तो कलयुग में तो वे नहीं होता है, ठीक है। तो अर्जुन को ऑफर दिया था, तो अर्जुन ने, लेकिन उनको भी विवाह कराया अपने पुत्र से। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी तो प्रभुपाद जी हिस्ट्री बता रहे थे उत्तरा की, महारानी उत्तरा की, अभिमन्यु की और परीक्षित महाराज की। श्री प्रभुपाद की जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद।
श्रील प्रभुपाद की जय।